जो Yes, sir. न्यूज़पेपर से जो मैंने बनाने के लिए कहा था, उसकी शुरुआत की है. Don't miss it, Sahil. If you really want to qualify this exam, you need to do it seriously. I won't say that this exam is difficult or this exam is very tough. The only thing is that consistency and tediously आपको ये करना है, रोज के रोज करना है, without fail आपको ये रोज के रोज करना पड़ेगा. That is the most important thing. Got it, Sahil? Yes, sir. Today onwards, I will start it sincerely. ठीक है, चलिए. ज्यादा टाइम नहीं लगता है. It takes only half an hour in a day to do the background preparation. आपके पास में इंटरनेट है, आपके पास में चैट जीपीटी है, आपके पास में गूगल है, आपके पास में यूट्यूब है. इन दोनों का वॉइस इस्तेमाल आपको करना है. ठीक है, चलिए. सो today's newspaper, the headline is related to the Kejriwal's meeting which was held yesterday. So you are next. Kejriwal warns states not with BJP, targets Prime Minister over ordinance. So we know that recently the Supreme Court had given a judgment with respect to the interference of the central government in Delhi government. As we all know, अभी फिलहाल का जो constitutional structure है, that Delhi is a union capital territory, which is also called as national capital territory. And in Delhi, we have an elected government and we have a elected chief minister, where MLAs are elected and chief minister is also there. But at the same time, since the Delhi is a national capital territory, it is also one of the union territory. Some of the functions are carried by the central government. So when we discuss the Indian polity, we see that in India, there are certain union territories, there are certain, areas in India which are under the direct control of the central government. In GS paper 2, there is one topic called federalism. And we have already discussed federalism means separation of power between the union government and the state government. And there are certain issues with respect to the separation of power or division of power, rather separation of power, division of power between the union government and the state government. So same such issue is also going on between the union government and Delhi government. Delhi government is not a complete state, and that is why जैसे नॉर्मल स्टेट्स के लिए बाकी के जो कंप्लीट स्टेट्स है जैसे कि महाराष्ट्र, कर्नाटका, यूपी, ऑल दीज आर द कंप्लीट स्टेट्स. But Delhi government is having a limited responsibilities and limited, the functions. Even the Delhi government is not having the power to decide about the transfer of IAS and IPS officer. नॉर्मली जो बाकी के जो स्टेट्स है वहां के जो स्टेट कार्डर में काम करने वाले जो IAS ऑफिसर होते हैं या स्टेट कार्डर में काम करने वाले जो IPS ऑफिसर होते हैं या जो एम्प्लॉइज होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, उनका ट्रांसफर करने का जो पावर है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास में होता है. अकॉर्डिंग टू द नीड, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, द स्टेट गवर्नमेंट कैन ट्रांसफर एनी ऑफिसर एज पर, बिकॉज दैट इज एन इलेक्टेड गवर्नमेंट. लोगों ने उन्हें चुना हुआ है, तो उनके बेहतरी के लिए या लोगों के वेलफेयर के लिए स्टेट गवर्नमेंट को पावर दिया गया है कि दैट दे कैन ट्रांसफर देयर ऑफिसर्स. बट विथ रिस्पेक्ट टू दिल्ली, the transfer power is been with the union government and not with the state government or not with the chief minister. So that is what is the controversy. That Arvind Kejriwal wants that the power of transfer of the IAS and IPS and all bureaucrats should be with the chief minister of Delhi and not with the lieutenant governor. Lieutenant governor is a intermediary between union government and state government. So recently Supreme Court ने judgment दिया था the transfer of power of the officers in Delhi should be with the chief minister and not with the lieutenant government. That was the judgment given by the Supreme Court. The Supreme Court का judgment आने के बाद union government did not wanted to give this power to the Arvind Kejriwal, and that is why they have brought a ordinance. All of you know what is ordinance? Ordinance क्या होता है? Any idea, Saima, Sahil? Have you ever heard about ordinance? Ordinance is issued by whom? Sahil, Saima? Who issued the ordinance? Any idea about it? Member of Parliament. No, ordinance is actually issued by President of India. When मतलब अगर कोई कानून बनाने में अगर देरी हो रही है
तो ऐसे सिचुएशन में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक ऑर्डिनेंस इश्यू करते हैं। तो अभी यहाँ पर वही हुआ है, यहाँ पर क्या हुआ है कि अभी वो जो अमेंडमेंट या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने के लिए समय लगेगा, तो ये समय ना लगे इसके लिए डायरेक्टली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से इस ऑर्डिनेंस को इश्यू किया गया है। तो ऑर्डिनेंस इश्यू करने के लिए यू डोंट नीड टू टेक द अप्रूवल ऑफ द राज्यसभा एंड पार्लियामेंट व्हेन इट इज इश्यूड, बट यस ऑफ कोर्स बाद में ऑर्डिनेंस इश्यू करने के बाद राज्यसभा और पार्लियामेंट का अप्रूवल लेना जरूरी होता है बिफोर 6 weeks ऑफ द commencement of the parliament. So that's what you can see here, that जो ऑर्डिनेंस इशू किया गया था by the union government for not allowing the transfer of the officers by the Delhi chief minister, उसके खिलाफ में उन्होंने एक मीटिंग बुलाई थी। तो उन्होंने, केजरीवाल ने यही कहा है कि बाकी के जो स्टेट्स हैं उन्होंने वार्न किया है कि यू विल बी द नेक्स्ट, मतलब योर पावर, स्टेट गवर्नमेंट की जो पावर है, चीफ मिनिस्टर की जो पावर है of transferring the officers, IAS officers and office officers, they will be taken out, and this power will be taken by the union government. All of understood what is this all issue is about? ये headline समझ में आ गई? You are next. Kejriwal wants states, मतलब other states, not with BJP, targets prime minister over the ordinance. तो इस ordinance को लेकर prime minister ने, अरविंद केजरीवाल ने प्राइम मिनिस्टर को क्या किया है, टारगेट किया है। सो रो ओवर कंट्रोल ऑफ दिल्ली इंटेंसिफाइज। दिल्ली किसके कंट्रोल में रहेगी? यूनियन गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहेगी या स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहेगी? इसको लेकर एक जो रो है वो इंटेंसिफाई हो गया। इज इट क्लियर साहिबा? इज इट क्लियर टू यू? ओके, तो ये जो अरविंद केजरीवाल ने जो कहा है उसको बीजेपी ने अगेन दे हैव हिट बैक टू हिम। दे सेड दैट कि दिल्ली गवर्नमेंट इज करप्ट एंड इल मैनर्ड नवाब and he is out to destroy Delhi, and that is why we are not giving any power to him. So GS paper 2 topic issues related to evolution of power and federalism. Now as a UPSC aspirant, सबसे पहले चीज तो आपको ये पता होना चाहिए कि what is federalism, what is union government, what is state government, what are the responsibilities of union government and what are the responsibilities of the state government, and especially what is the responsibility of the Delhi government, because Delhi government is not having the same power like the other state governments in India. Delhi is not a complete state. Delhi is a national capital territory with chief minister and MLA. ये पूरा स्ट्रक्चर आपको समझना जरूरी है। और ये अभी इश्यू क्या चल रहा है, what this issue is going on, why Arvind Kejriwal want the power, transfer power with himself, and why the union government, the central government is not ready to give the power to the Arvind Kejriwal. क्लियर? तो आज आप जाकर क्या कर रहे हैं, यू विल चेक इन चैट जीपीटी नेशनल कैपिटल टेरिटरी, एनसीटी क्या है, और व्हाट आर द प्रोविजंस रिलेटेड टू नेशनल कैपिटल टेरिटरी इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली को लेकर क्या प्रोविजंस बनाए गए हैं वो आज आपको देखना है। क्लियर साइड? Yes, sir. चलिए, ना अलर्ट साउंडेड as the cyclone changes its path, heads to the Gujarat coast. As we all know, in the geography हमने पढ़ा था कि cyclones are developed between in the tropical zones. तो since India के बीच से 23.5 लाइन चली जाती है, Tropic of Cancer चला जाता है, तो both the sides of India, that is Bay of Bengal as well as the Arabian Sea, there is continuous creation of the cyclones. And these cyclones hit to the coast and it leads to disaster, it leads to some problems. So there is one cyclone which is named as Biparjoy. It is going to hit on the Gujarat coast, and that's why the alert has been declared by the state government as well as union government. So that's what you can see here, that Biparjoy to make landfall on June 15. It will hit on the land, it will hit on the coast on June 15. Warnings of storm and flood surges. So that's what you can check it out here. So now as a UPSC aspirant, basic में हम पढ़ेंगे what are cyclones, how the cyclones are created, and how the cyclones are named. Here you can see the name of the cyclone, that is Biparjoy. तो हर cyclone का अलग अलग नाम होता है, तो ये cyclone के names कौन decide करता है, cyclone कैसे create होता है, and
once it hits on the land, what happens with the cyclones? Like why we do not find the cyclones on the land, why the cyclones destroys or why the cyclones dissipate on the coast only, why it does not enter into the land. That also we are going to discuss in the basics of geography class. I think I have already discussed it with my earlier classes. I don't know whether you have attended or not, but we will be discussing it once again when I will be discussing the geography. Right, Simon, do you remember in world geography we have discussed about the cyclones, that how cyclones are developed and why the cyclones, when it hits on the land, it dissipates? Am I audible? Yes, sir. Okay. So please read this article of cyclone, which is going to be hit on the Gujarat coast. Here again a very disappointing news that engineers are taking up non-core jobs is a waste of resources. GS paper 3 topic mobilization of resources, that is human resources, and GS paper 2 topic challenges with respect to the development and management of human resources. Do you remember this topic is there in GS paper 2? Right, challenges and issues related to the development and management of education, health and human resources. तो इंडिया का जो ह्यूमन रिसोर्सेस हैं, जो इंजीनियर्स हैं, दे आर नॉट टेकिंग द कोर जॉब्स. राइट, कोर जॉब्स मतलब इंजीनियरिंग के जो जॉब्स है वो नहीं कर रहे हैं, एंड दे आर टेकिंग द नॉन कोर जॉब्स, मतलब जो नॉन इंजीनियरिंग जॉब्स है दे आर टेकिंग इट, एंड इट इज अ वेस्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस ऑफ इंडिया. दैट्स व्हाट वी Kamakoti says. All of you agree with him? Yes, sir. Saima? So that is what is mentioned here. So please read it out. This is one of the important issue in India. That is, the engineers in India or the skilled manpower in India, they are not doing the jobs in their respective fields. What could be the reason that why engineers are not taking up the non-core jobs? Why they are doing the non-engineering jobs in India? What do you think so? Saima, क्या लगता है आपको? Why engineers are not taking the core jobs? Simple reason, sir. The jobs are not available in their field. मतलब उनका जो फील्ड है इंजीनियरिंग फील्ड, उसमें जॉब्स अवेलेबल नहीं है. नाउ टेल मी, मैक्सिमम जॉब्स फॉर द इंजीनियर्स आर अवेलेबल इन विच सेक्टर? एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर? मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज. मैन्युफैक्चरिंग में है और सर्विसेज सेक्टर में है. राइट, एग्रीकल्चर में भी है, ऐसे नहीं कि नहीं है. लाइक फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग है या इनोवेशन है, या उसमें भी है, लेकिन मैक्सिमम जॉब्स फॉर द इंजीनियर्स आर अवेलेबल इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. एंड एज वी ऑल नो दैट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज अ स्टैग्नेंट सेक्टर इन इंडिया. जितने बड़े पैमाने पे बढ़ना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, उतना इंडिया में नहीं बढ़ा है. एंड दैट इज द रीजन that engineers are not getting the jobs in their field. Got it? Okay, now next news, again a very important news, that in South India more women have availed a loan scheme for street vendors. As we all know that after pandemic the government has declared a loan for street vendors. Anyone remember what was the name given to that the scheme in which the street vendors have been given some financial assistance after the pandemic? अच्छा, आपको ये तो पता है पैंडेमिक के बाद में गवर्नमेंट ने स्ट्रीट वेंडर्स के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए एक स्कीम शुरुआत की थी, which I have already discussed many a times. Do you remember that? Hello? No, sir. I'm audible? ठीक है. So after pandemic, the street vendors were the people who have been affected mostly. उनके लिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम शुरू की थी, that is called as street vendors, a loan scheme for street vendors, that is Prime Minister Swanidhi. तो उसमें around 20,000 rupees has been given to the street vendors so that they can re-establish themselves. So South India में more women have been availed loan schemes for the street vendors. मतलब साउथ इंडिया के जो स्टेट्स है वहां पे ज्यादा से ज्यादा औरतों ने इस स्कीम्स का क्या लिया है, फायदा लिया है या उन्होंने लोन लिया है.
नाउ इट्स अगेन डिफरेंट थिंग कि लोन लेने के बाद उन्होंने उसको वापस किया है या नहीं किया है, वो एक अलग डिबेट है, अलग डिस्कशन है. But yes, the more women have been taken loans from the street vendors in South India. So here you can see there is a clear north-south divide in the distribution of loans under the central government scheme for street vendors launched during COVID-19, who took more loans dependent not just on the social fabric of the region, but also how aggressively municipal authorities push the schemes and their targeting strategy. तो ये लोन जब गवर्नमेंट कोई स्कीम शुरू करता है, चाहे लोन स्कीम हो कोई भी स्कीम हो, तो उस स्कीम का जो सक्सेस है इट डिपेंड्स अपॉन दैट हाउ द म्युनिसिपल मतलब लोकल बॉडीज, एग्जांपल लोकल बॉडीज हैं, चाहे वो अर्बन एरिया में हो या रूरल एरिया में हो, कोई भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड अगर कोई स्कीम है, सेंट्रली मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की बनाई हुई अगर कोई योजना है, उसको अगर सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करना है, the role of the local self bodies, the role of the local bodies also very important. You understood? तो GS पेपर 2 में एक टॉपिक है role of local bodies in developmental activities and in Indian politics. तो वही यहाँ पर मेंशन किया गया. Although this scheme has been started by the central government, here it is mentioned that who took more loans depended not just on the social fabric of the region, मतलब उस region के सिर्फ social fabric पे नहीं, it also depended on how aggressively the municipal authorities, that is municipal corporations, महानगर पालिका, local bodies, they have pushed the scheme and their targeting strategy. तो आपको बस अभी एक चीज यहाँ पे ये सीखने को मिलती है कि कोई भी गवर्नमेंट की जो स्कीम होती है उसको अगर सक्सेसफुल इंप्लीमेंट अगर करना है, so the participation of the local bodies or the use of the local bodies and help of the local bodies is of intense importance. Is it clear? समझ में आ गया? This is just an example of this street vendors loan scheme. Social fabric is also important, but along with social fabric, what is also important? The municipal corporations or the local bodies, that how effectively they are working. तो GS पेपर 2 में एक और टॉपिक है social welfare for the marginalized section of the society and issues related to their design and implementation. Clear? Hello, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Why others are not joining? Now let's move on to the next page. Arvind Kejriwal's, as you all know, that the National Capital Territory is spending more money on schools and health. So this is one more advertisement of the Delhi government that they are going to inaugurate a new school building in Delhi. June 12 is a Russia Day, India-Russia relationship. As we have read so many times that what kind of relations we do have with Russia. Russia has always helped us during its tough time. So that's what you can see that GS paper 2 में topic है bilateral relationship. So India-Russia bilateral relationship के लिए आपको ये this article will be very helpful for you. That Russia and India celebrate 30 years of signing the Treaty of Friendship and Cooperation. So both the nations forged strong scientific and technological cooperation, elevating advancements in space science and technology. तो इंडिया और रशिया के बीच में किस तरीके के bilateral relationship है, that's what you can come to know by reading this article. So please read this whole article, cut this article and put it into GS paper 2 topic India-Russia bilateral relationship. Clear? Yes. So here there is one message given by the Russian ambassador to India, Denis Alipov. तो ये पढ़ना है और इसमें के कुछ पॉइंट्स हैं कि इंडिया रशिया बायलैटरल रिलेशनशिप कैसे है वो आपको देखना है.
अगर ये पढ़ना बहुत ज्यादा अगर आपके लिए लग रहा है कि बोरिंग है, बहुत ज्यादा लग रहा है, लेंदी लग रहा है, तो सिंपली आप गूगल में सर्च करोगे इंडिया रशिया बायलैटरल रिलेशनशिप। इज इट क्लियर? Yes. Yes, sir. चैट जीपीटी में से आप करोगे। तो बस अभी यहाँ पर ये ध्यान में रखना है कि इंडिया रशिया इज हैविंग अ स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन एंड वी आल्सो हैव द कोऑपरेशन इन टर्म्स ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो कौन से एरिया में दोनों कंट्रीज एक दूसरे को मदद करते हैं वो आपको देखने की जरूरत है। ब्रह्मोस, was there any question on BrahMos this time in prelims exam? अगर आपने क्वेश्चन पेपर देखा होगा तो in this year's prelims exam they have asked a question on ballistic missile and the cruise missile. Simon, do you remember? मैंने क्लास में कभी आपको बताया था you need to know the difference between the ballistic missile and cruise missile. बैलिस्टिक मिसाइल्स क्या होते हैं, क्रूज मिसाइल्स क्या होते हैं, ये डिफरेंस मैंने देखने के लिए बताया था इससे पहले। इस साल के प्रीलिम्स एग्जाम में वही क्वेश्चन आया था। मैंने ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट को बताया था कि यू नीड टू नो एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट द डिफरेंस बिटवीन द क्रूज मिसाइल एंड बैलिस्टिक मिसाइल। सो ब्रह्मोस इज वन सच, यू नो, द क्रूज मिसाइल इन इंडिया, राइट? सो this is what the BrahMos is a missile which has been developed collectively by both India and Russia. Supersonic BrahMos fortifying India's global stature. तो BrahMos की वजह से इंडिया का ग्लोबल स्ट्रक्चर हुआ है। तो ये BrahMos बनाने के लिए रशिया ने हमें मदद किया था। डू यू नो दैट व्हाई द नेम इज BrahMos? ये BrahMos नाम कैसे आया है? उस मिसाइल का नाम BrahMos क्यों दिया गया है? No idea. Yes, BrahMos is the name given in the context of India's river Brahmaputra in Moscow river of Russia. Okay. Just give me a second. मुस्तफा, क्लास ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है? नहीं। Okay, because nobody is joining the class, newspaper class. अपने टाइमिंग का 10 बजे डाला। क्या टाइमिंग 10 बजे दिया है क्लास का। 10 बजे नहीं, 9 से 10 बजे है ना? 10 बजे दिया, 10 बजे मैसेज डाला अपने ग्रुप पे, व्हाट्सएप पे। नो, मैंने तुम्हें न्यूज़पेपर का क्लास 9 से 10 बताया था ना? सर लेकिन इसमें मैसेज में 10 का ही टाइम है। वो 10 बजे की सर। ओके ओके ओके, वो टाइमिंग 10 AM का हो गया है क्या उसमें? हाँ, उसमें 10 AM और टाइम था, इसलिए वो ज्वाइन नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी मैं लाइव ज्वाइन कर चुका हूँ, बाद में आई शेयर द रिकॉर्डिंग। ठीक है, कहाँ पे इसके ऊपर ज्वाइन हो रहा है? yes yes, you can click and join now. Okay, so the supersonic missile BrahMos, the name has been given to the to this missile BrahMos because this is a short form of Brahmaputra river and Moscow. Moscow is the river of the Russia and Brahmaputra is the river of India. इन दोनों का नाम मिलाकर इसको BrahMos नाम किया गया है। तो ये BrahMos मिसाइल को बनाने के लिए रशिया ने हमें मदद किया था। They have shared the technology to us. Is it clear? And in this year's prelims exam, there was a question on BrahMos and Agni missile. So BrahMos ये कौन सा मिसाइल है? Whether it is a cruise missile or whether it is a ballistic missile, this question has been asked in this year's prelims exam. Right, Mustafa? There was a question this time. Yes, sir. Right? Difference between the BrahMos missile and cruise missile, sir. Yes. तो ये बैलिस्टिक मिसाइल है या क्रूज मिसाइल, ये पूछा था उन्होंने। तो ये if you have read the newspaper, it would have been very easy for you to answer the question of that question. तो मैंने आपको बताया भी था कि what is the difference between the ballistic missile and BrahMos missile, right? Can you please mute yourself, Mustafa? चलिए, now let's move on to the today's editorial. Today's editorial is related to maximum support. MSP का फुल फॉर्म क्या होता है? मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस और मिनिमम सपोर्ट प्राइस? Minimum support.
right? But the editor is saying about the maximum support, right? So issues related to minimum support price. I think in yesterday, on Saturday's newspaper, I have asked you people to go and check it out. What is the minimum support price? And in fact, I have shared it on the on our group as well. कि minimum support price क्या होता है? What is the objective of the minimum support price? And why it is given to the farmers? And what are the issues associated with the minimum support price? All right, Sahil? Yes, sir. So increase in MSPs make economic sense, sends right signals to the farmers when domestic supplies of the agro commodities are finally balanced. So as per the editorial, MSP में बढ़ोतरी करना एक economic sense है. It sends right signals to the farmers when domestic supplies of the agro commodities, जो agro commodities का जो domestic supply है, वो जब कम हो गया है, वो फाइनली बैलेंस हो जाएगा, तो उस समय में एमएसपी को बढ़ाना जरूरी है. We know some people believe that कि MSPs are not good and some people believe that कि MSP देना चाहिए farmers के लिए. There are certain issues with respect to the MSPs in India, that is minimum support price in India, right? So the Narendra Modi government has raised the minimum support price MSP of 2023. हमने देखा था recently Supreme Court government ने decide किया है. और इस साल के प्रीलिम्स एग्जाम में there was one question related to the minimum support price that नाइजर क्रॉप्स के लिए, ऑयल सीड्स के लिए क्या ये बढ़ाया गया है या नहीं बढ़ाया गया है, या क्या उसको एमएसपी डिक्लेयर किया जाता है बाय द गवर्नमेंट? दैट क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन दिस ईयर्स प्रीलिम्स एग्जाम. यस मुस्तफा. Sir, in this year's prelims exam, there is one question on related to MSP. The question was, the government of India provides minimum support price for Niger seeds. And yes. second So statement, does it provide or it does not provide, Mustafa? I don't think so. Yes, Sahil, what do you think? Whether Yes, sir. It provides, Gujarat, right? Yes, sir, provides. And the It second provides. statement is Niger is cultivated as a kharif crop. And then third one is some tribal people in India use Niger seeds oil for cooking. Okay. Mustafa, I guess you have not attended the question paper analysis class. Yes, sir. Yes, not attended. We have already discussed this, the question, and it was very easy question for those people who were reading the newspaper, right? Anyways, what I am telling to you that ऐसे जो question आते हैं prelims exam में, such type of questions you could solve by only reading newspaper, right? Now, I think 3 or 4 days back, the government ने जब MSP declare किया था, तो उसमें they have given the list of the crops on which the MSP is declared, and they have also given that how much MSP is increased for those crops. So उसमें Niger seed was also there, right? Sahil, do you remember that? Hello, am I audible? Yes, sir, you are audible. Okay. So in prelims, they do ask such type of questions, but in mains exam, they do ask the issues associated with the MSP. So we have seen that Ashok Gulati says that the minimum support price should not be given. Rather than giving minimum support price to the farmers, Ashok Gulati says that the government should focus more on agricultural research and development and create infrastructure for agriculture development in India. That is what is the stand of Ashok Gulati. But while editor is saying that giving minimum support price to the farmers is a right signal because it will create a proper balance of the agro commodity supplies in India. Clear? So as a UPSC aspirant, you need to know both the sides of the coin. You need to know why MSP should be provided and why it should not be provided. Right? Because in prelims, in mains exam, they might ask you question like critically analyze the importance of MSP, या आपको MSP से रिलेटेड जो कंट्रोवर्सी चल रही है उसको लेकर आपको आपका एक ओपिनियन पूछा जा सकता है. तो you need to know both the sides कि why MSP should be provided and why MSP should not be provided. Got it? ग्रुप पे मैसेज करो क्लास ज्वाइन करने के लिए. Yes, sir. चलिए. So please read this today's editorial. ये पूरा आज का जो editorial है ये पूरा आपको पढ़ना है. Clear? A stealthy spread, alarm bells rung by Lancet study on lifestyle disorders must not be ignored.
तो लैंसेट एक इंटरनेशनल मैगजीन है. लैंसेट इज अ मैगजीन which publishes various research in the health sector all over the world. मतलब पूरे दुनिया में जो हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड जो इश्यूज है उसको लेकर वो कुछ रिसर्च पब्लिश करता है. तो द लैंसेट ने एक रिसर्च पब्लिश किया है विद रिस्पेक्ट टू द लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स. एनीवन नोस व्हाट इज लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स? व्हाट इज लाइफस्टाइल डिसऑर्डर? Sir, I think there is no schedule in the lifestyle of people. तो उसको उसके डिसऑर्डर क्या होते हैं? सर मतलब खाने के टाइम पे पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई के टाइम पे सो रहे हैं. नहीं, ये रीजन हो गया, बट उसके वजह से क्या डिसऑर्डर बनते हैं? सॉरी सर, मैं सोच नहीं पा रहा हूँ. वैसे लेकर के प्रॉब्लम्स होते हैं, इंक्रीज इन बीपी. दीज आर द लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स. गॉट इट सर? सर आपकी आवाज कट गई थी, वापस रिपीट कीजिए ना प्लीज. Lifestyle disorder मतलब the disorders which is created due to the reason which you have said. The lifestyle disorder मतलब क्या होना? That increase in sugar, increase in BP or increase in weight, obesity, या फिर हम कहेंगे कि the other problems like कुछ ऐसे disorders होते हैं कि these are created due to our lifestyles, like what we eat, how much we exercise, how much we sleep. Depending on that, जो human body में जो disorders बनते हैं, these are called as lifestyle disorders. Is it clear? Yes sir. ठीक है. So lifestyle disorders जो होते हैं, are they communicable or non-communicable? एक दूसरे से spread होते हैं या नहीं? Sir, non-communicable. Yes, these are also called as non-communicable diseases. Got it? NCD. तो इंडिया में पिछले कुछ दिनों से ये नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस बढ़ते जा रहे हैं या लाइफस्टाइल डिसऑर्डर इंडिया में बढ़ता जा रहा है. इज इट क्लियर? सो अलार्म बेल्स रंग बाय द लैंसेट स्टडी ऑन लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स मस्ट नॉट बी इग्नोर्ड. इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए. हेल्थ केयर सेक्टर मस्ट स्टेप अप द अवेयरनेस. टेल मी व्हिच टॉपिक ऑफ जीएस पेपर 2 दिस एडिटोरियल विल बी यूजफुल फॉर यू. Issues related to health. Yes. Issues related to management and development of healthcare sector. तो इंडिया में ये जो जैसे मैं आपको कहता हूँ ना कि you need to know what is primary health care, what is secondary health care, what is tertiary health care, what are the issues at the primary level, secondary level and tertiary level health care. At the same time, you also need to know what are the types of diseases which are most prevalent in India. तो पिछले कुछ दिनों से इंडिया में नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस बढ़ते जा रहे हैं and awareness related to this non-communicable diseases needs to be created. Got it? So second paragraph and last paragraph is also very important for you. Read this article, take this point and put it into GS paper 2 topic, issues related to management and development of health in India. समझ में आ गया? Yes sir. The caring city, GS paper 1 topic, issues related to urbanization and their remedies. तो सिटी केयर करने वाली होनी चाहिए. क्या हमारे सिटीज केयरिंग है? Yes or no? सर थोड़ा बहुत है. Caring है. Our Yes, villages for are example, caring, but I metro don't think so that our villages are caring, but I don't think so that cities are caring. Anyways, the urban centers must be disabled friendly, and inclusivity is a theme in India's G20 presidency. Now, this is about the rights of the disabled people in India. जो handicapped लोग होते हैं, उनको मदद करने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए. That's what is the meaning है. तो ध्यान में रखिए कि whenever we will be having the urban planning, या जब भी आपको केस स्टडी दिया जाएगा in GS पेपर 4,
मॉरल एथिक्स में अगर आपको कोई केस स्टडी दिया जाएगा तो आपके आंसर में ये जो फिजिकली डिसेबल्ड पीपल जो होते हैं उनको ध्यान में रखते हुए आपको सॉल्यूशन देना है। कोई भी क्वेश्चन हो जब आप सॉल्यूशन देंगे तो उस समय में ध्यान में रखना है कि आई नीड टू बी सेंसिटिव टुवर्ड्स द फिजिकली डिसेबल्ड पीपल, और उनके लिए भी उनके डिसेबल्ड फ्रेंडली सॉल्यूशन हमें देना है। गॉट इट? तो जब भी आप सपोज आप एग्जाम क्वालिफाई करोगे, आईएएस आईपीएस कलेक्टर कुछ भी बनोगे, तो you need to keep in mind whenever you are making any policy that policy should be supporting to those physically disabled people. Got it? So that is what is mentioned here. Urban centers must be disabled friendly. Inclusivity is a theme in G20's presidency. तो G20 के presidency में inclusive growth is the center theme. GS paper 3 topic, inclusive growth. Got it? Yes, sir. So it is very important that creating an inclusive and accessible India will require behavioral changes, capacity building, investment in accessible infrastructure, inclusive and accessible innovation. This will help inform policies of the country's progress towards the equitable urban future as envisioned for the Amrit Kaal. अभी इंडिया अमृत काल में जा रहा है, या दौर मतलब अमृत काल के दौर से गुजर रहा है, तो अमृत काल में ये सारी चीजें होनी चाहिए, राइट? सो एन इंक्लूसिव, एक्सेसिबल, सेल्फ रेजिलिएंट एंड सस्टेनेबल इंडिया एट 2047। तो 2047 पे इंडिया कैसे होना चाहिए? एक इंक्लूसिव होना चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए, सेफ होना